Compared to ribonucleic acid RNA, a molecule of deoxyribonucleic acid is RNA single stranded होता है, DNA is double stranded, means one is incorrect. Self-replicating is correct, DNA is self-replicating. DNA माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है. लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट, मीन्स 2 और 3 करेक्ट है. इस वजह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Maltose is a disaccharide in which two molecules of glucose join together by R/N. Glycosidic linkage, means C is the correct answer. Maltose is carbohydrate. In carbohydrates, two molecules are joined together by glycosidic linkage, means C is the correct answer. Just for your information, ईस्टर लिंकेज लिपिड्स में पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड्स में, दैट इज आरएनए और डीएनए में पाया जाता है. हमसे कार्बोहाइड्रेट से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया था, दैट्स वाई ऑप्शन सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोमिनरल्स आर ऑप्शन से आयरन एंड जिंक, सोडियम एंड आयोडीन, पोटेशियम एंड सल्फर, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम और सोडियम मैक्रो मिनरल्स है. आयरन, जिंक, आयोडीन माइक्रो मिनरल्स है. ऑप्शन ए रिप्रेजेंट करा था दोनों माइक्रो मिनरल्स को, दैट्स वाई ऑप्शन ए आयरन एंड जिंक इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स in the presence of nickel as a catalyst at 60 degrees centigrade results in the formation of a compound X having Y bonds. Which of these represents X and Y? X is saturated fats. वेजिटेबल घी क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और उनके सारे बॉन्ड्स कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड्स. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. दैट इज X is saturated fats and Y is single bonds, means A is the correct answer. Next question. In addition to carbon, hydrogen and oxygen, a protein molecule may also contain. Proteins are made up of amino acids. अमाइनो एसिड में हमें क्या नजर आता है? नाइट्रोजन. इस वजह से नाइट्रोजन शॉर्टलिस्ट हो गया. प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर में हमें डाइसल्फाइड्स बॉन्ड नजर आते हैं जो सल्फर की वजह से होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन और सल्फर दोनों करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी में. दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर. इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अ प्रोटीन मॉलिक्यूल may also contain nitrogen and sulfur, means B is the right answer. Next question. Monosaccharides differ from disaccharides on the basis of their options है color, hydrolysis, physical state, solubility in water. वैसे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी हाइड्रोलिसिस, मीन्स बी इज द राइट आंसर. एज यू नो, मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर्स which cannot be hydrolyzed, whereas disaccharides can be. That's why option B, hydrolysis, is the correct answer. Monosaccharides differ from disaccharides on the basis of their hydrolysis. Next question. Which of the following does not denature proteins? Heat, vinegar, ethanol denature करते हैं प्रोटीन्स को, except water. वाटर डीनेचर नहीं करता प्रोटीन्स को, दैट्स वाई बी वाटर इज द करेक्ट आंसर. वाटर डज नॉट डीनेचर प्रोटीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. एमाइलेज एंजाइम्स आर यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग एज दे फैसिलिटेट द ब्रेकडाउन ऑफ. ऑप्शन ए स्टार्च, लैक्टोज, माल्टोज, सेलुलोज. करेक्ट आंसर इज ए स्टार्च. एमाइलेज एंजाइम्स आर यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग एज दे फैसिलिटेट द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च. As you know, enzymes are specific in nature. Amylase enzymes are used in bread making because they can yield more starch of the flour. Even they are efficient enough to convert starch to sweet glucose syrup. This can be used as sweetener. That's why A starch is the correct answer. Next question. Which of the following statements is true about oils? Option A है
दे आर डेंसर देन वाटर इनकरेक्ट है, दे आर लाइटर देन वाटर। ऑप्शन बी है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इनकरेक्ट है, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन सी है दे आर स्टेबल एंड कैन नॉट बी हाइड्रोजनेटेड इनकरेक्ट है, दे कैन बी हाइड्रोजनेटेड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज दे आर triglycerides of unsaturated fatty acids, means D is the correct answer. Next question, oils can be converted into fats by the process of options है oxidation, hydration, halogenation, hydrogenation. Option D hydrogenation is the correct answer. Oils can be converted into fats by the process of hydrogenation, means D is the correct answer. Next question, dextrose is given intravenously to patients with options है high fever, low blood sugar, low calcium level, high blood pressure। वैसे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी low blood sugar। As you know, dextrose is crystallized sugar, natural sugar found in starchy foods. It provides simple carbohydrates to the body that can be easily broken down and processed. That's why option B, low blood sugar, is the correct answer. Next question, which of the following statements is false about deoxyribonucleic acid, that is DNA? Option B, C, D true statements say about DNA, that is it is a long double stranded molecule. Synthesis of RNA is controlled by DNA. It stores all genetic information of the cell. हमें फॉल्स स्टेटमेंट पहचानने के लिए कहा गया था, इसलिए ऑप्शन ए डैमेज टू डीएनए कॉजेस टाइफॉइड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, carbohydrates are made up of, as you know, carbohydrates are macromolecules defined as polyhydroxyaldehydes or ketones. That's why option A, carbon, hydrogen and oxygen, is the correct answer. Carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen, means A is the right answer. Next question, when albumin, protein of egg white, is heated, it shows a change in given option color and viscosity, mass and particle size, volume and peptide bonding, primary and secondary structure। में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज कलर एंड विस्कोसिटी। आप याद रखें हीटिंग करने पे कभी भी पेप्टाइड बॉन्डिंग और प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, इसलिए ए करेक्ट आंसर है, दैट इज इट शोज अ चेंज इन कलर एंड विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% dextrose solution given intravenously to a patient provides all of the following except that it replaces lost fluid, strengthens bones, increases blood sugar, fulfills nutritional needs। में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज strengthens bones, क्योंकि डेक्सट्रोज शुगर से बोन्स स्ट्रेंथन नहीं होती है, दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the structure of deoxyribonucleic acid does not consist of, हमसे does not कहा गया इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज 6 कार्बन शुगर एज द बैकबोन ऑफ ईच चेन। डीएनए में 6 कार्बन शुगर नहीं होती है, 5 कार्बन होती है, बाकी सारे ऑप्शंस डीएनए में मौजूद होते हैं, दैट इज एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप, थायमीन एज वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस, a double helix with 2 strands coiled around each other। 6 कार्बन शुगर नहीं होती है, 5 कार्बन होती है, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। All of the following are fat soluble vitamins except vitamin B, means vitamin B is not fat soluble, water soluble है, that's why B is the correct answer। Vitamin A, vitamin D, vitamin E fat soluble है। जो ट्रिक मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ याद करने के लिए वो है BBC न्यूज़, मीन्स विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, और इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो फैट सोल्यूबल है।
बस आप BBC न्यूज़ से याद कर लें, विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्यूबल है, बाकी सारे विटामिन फैट सॉल्यूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिटर्जेंट कंपनी receives complaints from their customers that one of their detergents is inefficient against starch-based stains. On investigation, it is found that an enzyme that breaks down starch-based stains is missing in the detergent. Which of the following is the missing enzyme? स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एंजाइम मदद करता है? लाइपेज, लैक्टेज, प्रोटीएज, एमाइलेज में से आपको पता है एमाइलेज करता है, दैट्स व्हाई एमाइलेज इज द मिसिंग एंजाइम, मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स इज फाउंड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल? अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। Amino acids are organic compounds consisting of both amino and carboxyl groups. मीन्स हमें गिवन ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है अमाइनो एसिड को, और अमाइनो एसिड में दोनों ग्रुप्स होते हैं, अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप। हमें ऑप्शन ए में सिर्फ और सिर्फ अमाइनो ग्रुप नज़र आ रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप नज़र नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी में हमें कार्बोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहा है, अमाइनो ग्रुप नहीं। ऑप्शन डी में हमें 2 अमाइनो ग्रुप नज़र आ रहे, कार्बोक्सिल ग्रुप नज़र नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी में हमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी नज़र आ रहा है और अमाइनो ग्रुप भी, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर विच इज करेक्टली रिप्रेजेंटिंग अमाइनो एसिड, मीन्स बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज gives 1 unit of glucose and 1 unit of fructose on given option reduction, hydrolysis, कंडेंसेशन, डिकम्पोजिशन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज हाइड्रोलिसिस। सुक्रोज गिव्स 1 unit of glucose and 1 unit of fructose on hydrolysis, means B is the right answer. Next question, all of the following are disaccharides except maltose, sucrose, lactose disaccharide है except cellulose, means A, cellulose is the correct answer. Cellulose is polysaccharide, not a disaccharide. Maltose is a disaccharide formed when two molecules of glucose are joined by glycosidic linkage. Sucrose is also a disaccharide formed when glucose and fructose are joined by glycosidic linkage. Lactose is also a disaccharide formed when lactose and glucose are joined by glycosidic linkage. Means option A, cellulose is not a disaccharide. Cellulose is polysaccharide. Means A, cellulose is the correct answer. Which of the following products is formed in the given polymerization reaction? येलो से मैंने एक अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल को हाईलाइट किया और ग्रीन से दूसरे अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल को हाईलाइट किया। 2 अमाइनो एसिड्स लिंक थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, ब्लू से मैंने पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड को हाईलाइट किया है। पेप्टाइड बॉन्ड्स किस में पाए जाते हैं? प्रोटीन्स में, दैट्स व्हाई बी, प्रोटीन्स इज द करेक्ट आंसर, मीन्स प्रोडक्ट विल बी प्रोटीन। लिपिड्स में ईस्टर लिंकेज मौजूद होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। चूँकि हमें पेप्टाइड लिंकेज नज़र आ रहा है, दैट्स व्हाई बी, प्रोटीन्स इज द करेक्ट आंसर। Which of the following enzymes is used to increase sweetness in ice creams? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से हमें करेक्ट आंसर पहचानना था। ऑप्शन ए, लेक्टेज इज द करेक्ट आंसर। Lactase enzymes is used to increase sweetness in ice creams as lactose in milk is broken down to lactose and glucose, which are sweeter than lactose. That's why A, lactase is the correct answer. Which of the following combinations is the major source of carbohydrates? मटन, बीन्स मेजर सोर्स है,
प्रोटीन के, बटर मेजर सोर्स है लिपिड्स का, हनी एंड सीरियल्स मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के। दैट्स वाई ऑप्शन डी honey and cereals is the correct answer, which are major source of carbohydrate. मटन, बीन, बटर इनकरेक्ट है, दैट्स वाई ए बी सी इनकरेक्ट हो गए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज हनी एंड सीरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल टेस्ट्स established that a child's body was unable to absorb calcium. This indicates that the child probably has a deficiency of given option vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D में से correct answer option D है, that is vitamin D. Because of the deficiency of vitamin D, child's body was unable to absorb calcium. कैल्शियम और विटामिन डी हमेशा साथ साथ चलते हैं, आप इसको याद कर लें, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the building block of lipids? As you know, fatty acids are building blocks of lipids. तो हमें आइडेंटिफाई करना था फैटी एसिड की एग्जांपल, तो इसमें करेक्ट आंसर है पामेटिक एसिड, दैट इज ऑप्शन सी C15H31COH, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो एग्जांपल है, करेक्ट एग्जांपल है फैटी एसिड की जो बिल्डिंग ब्लॉक है लिपिड्स के। ऑप्शन ए और बी कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल्स दी और ऑप्शन डी इज अमाइनो एसिड। हमसे लिपिड्स पूछा था, दैट्स व्हाई ओनली द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, dextrose is given to patients through drips because it richly provides dextrose is crystallized glucose, natural sugar found in starchy foods. It provides simple carbohydrates to the body that can be easily broken down and processed. That's why correct answer is option D, that is a carbohydrate. Dextrose is given to patients through drips because it richly provides a carbohydrate. D is the correct answer. Next question, which of the following carbohydrates is wrongly paired up with its source? कार्बोहाइड्रेट उसके सोर्सेज गिवन है, हमें रॉन्ग पेयर पहचानना है। As you know, lactose consisting of glucose and lactose is the main sugar in milk and dairy product. That's why option A, lactose apple is wrongly paired. That is our correct answer. जो रॉन्ग पेयर है वो ऑप्शन ए है, बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। दैट इज सुक्रोज, शुगर केन, माल्टोज, बार्ले, सेल्यूलोज, कॉटन, ये सारे क्या है करेक्ट पेयर है। हमको रॉन्ग पेयर पहचाना था, दैट्स वाई ऑप्शन ए लैक्टोज एप्पल इज द इनकरेक्ट, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि लैक्टोज मेन सोर्स किसमें होता है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairs is of disaccharides? Given option lactose and sucrose, glucose and lactose, sucrose and fructose, fructose and lactose में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज लैक्टोज एंड सुक्रोज। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एग्जाम्पल्स हैं मोनोसेकेराइड्स के। दैट्स वाई ऑप्शन बी, सी और डी इनकरेक्ट थे। ऑप्शन ए लैक्टोज एंड सुक्रोज इज द करेक्ट आंसर। Next question, which of the following does not denature proteins? Water does not denature proteins. Heat, vinegar, ethanol denature करते हैं। That's why option B is the correct answer. That is, water does not denature proteins. Means B is the right answer. Next question, which of the following statements shows the significance of nucleic acid? There are two types of nucleic acid, DNA and RNA. DNA is deoxyribonucleic acid, RNA is ribonucleic acid. That's why correct answer is option C, that is, it directs the synthesis of proteins. Option C is the correct answer. A, B, D incorrect है, means option C is the right answer. Next question, which of the following substances acts as enzymes in the human body? All enzymes are proteinaceous in nature. That's why proteins, option B is the correct answer. Option A, C, D incorrect है, that is fats, minerals, carbohydrates. B, proteins is the correct answer, means proteins act as enzymes in the human body.